Assalamu alaikum. Sanya, are you there? Miss Sanya? अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ Hafid, where are the other participants? They should have been here or what? जी सर। I'm just like contemplating. Where are the other participants? इट्स नॉट 6 येट। अब बज रहे हैं 6, शायद अब आ Maybe जाए। वो 6 बजे से पहले like they've been waiting outside. I let them like to be in or maybe something like that. Hmm. We've got a cloud recording also. So cloud से ही share किया जा सकता है, cloud से ही with the password, or you don't need to download. 1 GB की space देते हैं लोग. अच्छा चलो, Since that's nice. अच्छा Yeah, and upload you it, can upload it on YouTube as well, side yeah by of side, course, तो 1 GB of भी course, full नहीं होगा। yeah. So since you have logged in, so that proves that कि मैंने ID वगैरह सब सही दी है. जी Everything, I don't know. yes, let me send a text to Rakshanda as well, she was also waiting. Yeah. So why? Let's see. Mike is there? Anil Kumar is there? Where are they? Rakshanda is typing something. Uh-huh. Okay, she's logging in. Uh-huh. So where the other fellow has gone? They should be here. Yeah. The meeting is in progress. Quickly, I talked to Danish. Okay. So like, here's the meeting room. Will I have to allow? Sir, I cannot hear you properly. Your voice is very muffled. Is it okay now? Yes, it is okay. Oh, Rakshanda is here. Yeah. If she can dial in, she can come. Then why not the others? That's surprising. So are they waiting for my meeting room? अस्सलाम वालेकुम। Welcome, Miss Sachinda. Welcome, sir. सर आज जूम पे कर रहे हैं सेशन? Yeah, in fact, किसी ने मुझे बोला कि आप जरा Zoom का अकाउंट जरा टेस्ट करें, तो मैंने I bought a 1 month और फिर मैंने कहा कि जरा मैं टेस्ट करता हूँ Zoom पे, और फिर then I said कि okay, let's see, अब इसी पे करते हैं, अगर काम करना ही है तो फिर थोड़ा सा जरा काम कर लेंगे, and let's see what ठीक है happens. सर। Sir, your voice is not as clear as it usually is. जैसे Teams पे होती है। Teams में maybe वो शायद एक सेकंड वेट, हाँ. Is it okay now? थोड़ी सी muffled है। आप देखें. हाँ अब yes. Okay. So people are pouring in now. Mashallah, Jahanzeb is there. Jahanzeb, Assalamu alaikum.
Okay. That's surprising. Ms. Rakshinda, I've added few things on the Google Classroom GCR. So वहाँ पे जो विजिट करके देख सर लीजिएगा। आपकी वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। अच्छा। बहुत। Okay. Now let me know, is it okay? जी सर बेहतर है। Okay. Maybe my hand free is not working well. सर आपने अपना वॉल्यूम वहाँ पे आप उसको बढ़ा के देखें। वहाँ मैंने बढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? वो मे भी जी ऐसा सर हो सकता है प्लीज। कि देख, अब ठीक है? जी अब बेटर है। Okay. So now you'll hear everything of my computer now. Okay. जानजेब साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जानजेब खान साहब? Okay. Wow. So Ms. Rakshinda, I was telling कि GCR में जाके आप कुछ चीज़ें अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बल्कि अपने आप को वहाँ ग्रुप में ऐड ही कर दें उसमें। जी जी सर आई एम डूइंग द सेम। हाँ, बिकॉज मैं अभी फ्यूचर में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, माशाल्लाह आप दोनों को I'll count you as the attendees. So if something is going to happen in a good way direction for all the attendees, माशाल्लाह हमारी क्लास के MMR के, तो eventually you will also be part of it. So ओके सर थैंक for यू। example, yeah, for example, अभी I'm in a process of negotiating the access of the qualitative software. तो अगर वो एग्री कर लेते हैं तो फिर जितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे उन सबको मिल जाएगा, बल्कि मैं डॉक्टर दानिश को भी कहूँगा कि वो भी एज ए पार्टिसिपेंट के तौर पे जब वो आ जाएंगे या मैं दैट्स एज ए ग्रेट। पार्टिसिपेंट के तौर पे आ जाएंगे तो वो हमें एक सेमेस्टर के लिए मे बी 60 डेज का एक्सेस हमें सॉफ्टवेयर का कंप्लीट एक्सेस विद लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स, लॉट ऑफ वीडियोस एंड कंप्लीट, तो वो उनको मिल जाएगा ताकि वो ऑनलाइन ही जाके एक्सेस करें, ऑनलाइन ही जाके काम करें, सब कुछ ऑनलाइन एवरीथिंग। तो दे विल राइट अ पेपर, जो भी ये सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी। So okay, nobody else. आज लगता है दिन जो है ना वो वेटिंग का दिन है। इस क्लास में यूजुअली वेट हो रहा होता है अच्छा खासा सर। जी, वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है। और now there's a fifth person, that's good. Who's the fifth person? साकिब मोहम्मद, नहीं। साकिब साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हमें सुन सकते हैं? ओके। अच्छा, you can't hear me? That's strange.
अच्छा, मुझे बताइएगा अब मेरी आवाज़ अगर सही है या नहीं है, मुझे बताइएगा, आप में से कोई भी बताइएगा। इज इट ओके ना? सर अभी काफ़ी बेहतर हुई है। ओके फाइन। सर बिल्कुल ठीक है अब तो। ओके दैट्स ग्रेट। आपकी मेरे ख्याल में That's थोड़ी सी better. आवाज़ कम आती है। मेरे ख्याल में रक्षंदा बोल रही है तो उनकी आवाज़ काफ़ी हद तक क्लियर है, बट आपकी मेरे ख्याल में आई थिंक माइक में शायद कोई प्रॉब्लम है जो आवाज़ कम ज़्यादा हो रही होती है। I believe you're right because this is, sorry, unfortunately this is the only class where I have an issue with it. Otherwise बाकी पूरे हफ्ते काफ़ी में बेहतर है आवाज़, या अभी मैं, बेहतर है काफ़ी आवाज़। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो इसमें मैं दूसरी क्लासेस के अंदर आमतौर पे करता हूँ, वहाँ शायद कंप्लेन कम आती है, या हो सकता है उनको रियलाइज नहीं होता हो, मे बी समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, बट लेकिन शायद मे ऐसा ही बी हो, मे बी। मे बी। चलें, ओके। Now let me know, can you hear my voice now easily? Is it यस सर, okay? इट्स परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अच्छा, अब ठीक है, अब ज़्यादा बेहतर है, राइट, जी सर बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। साकिब साहब, बाकी लोगों को मैसेज करके उनको बता दीजिए, बिकॉज आई had a notification from Anil Kumar and Faik. I don't know where they have been. I mean, they actually logged in earlier than anybody else. उसके बाद फिर मुझे नहीं पता वो कहाँ गए। सर मैं अभी चेक करके आपको जी बताता प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत शुक्रिया। हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सलमान साहब, आपको आवाज सही आ रही है मेरी? एवरीथिंग इज ओके विद यू? वाह, maybe. सर अनिल इज कमिंग, बाकी भी इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेते हैं। जी मैंने अच्छा, ग्रुप में मैसेज कर दिया सर। बहुत शुक्रिया।
Okay, guys, I think I should not wait more, and because it's almost 20 minutes past that. So what I'm doing is I'll be starting, and now ज़ाहिर session इतना लंबा है या नहीं है, that's a different story, because I always thought कि इसको मैं थोड़ा सा short रखूंगा, but since आप लोग अभी काफी late join किए, कुछ लोगों ने माशाल्लाह पहले join कर लिया, so what I'll do, I'll transfer the responsibility on them that they should speak to their colleagues and explain what I'm going to do, because आज मैंने बहुत important एक बात भी करनी है, and that's regarding the deadline of 20th April. लेकिन कोई बात नहीं, वो बाद में आएंगे, आपसे पूछेंगे, आप उनको जरूर बता दीजिएगा. तो आई एम प्रीटी श्योर, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट कि आप लोग माशाल्लाह उनको भी बेहतर गाइड कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं. और ऑन टॉप ऑफ इट आई विल ट्राई टू मेक इट अवेलेबल टुडेज लेट्स से रिकॉर्डिंग, एंड दे कैन सी. उसके बाद सर आपकी आवाज गायब हो गई इन मिडिल ऑफ द स्टेटमेंट. सर कैन यू हियर मी? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें. बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, सर की आवाज नहीं आ रही है. I think sir disconnect हो गए. Yes, I think sir has logged off. Let me text him. Exactly, सर का डिस्कनेक्ट हो गया. Should we rejoin again या फिर वेट करें सर का? Let me text him और मैं बताती हूँ फिर. चलें चलें ठीक. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम सलाम. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. लोग मुझे सुन सकते हैं अब? Yes, जी sir. sir. जी सर यस आपकी सर, आवाज. अब आ रही है सर आवाज. Yeah, thank you very much, because I think that there was like internet connection at my end. There was an issue. It didn't go off, but suddenly it actually pushed me outside the system. But let's see. वो बाद में फिर हम देख लेंगे कि क्या है. I'll look into it. So what I was trying to talk about कि जो लोग माशाल्लाह हमारे हैं उसमें I will be speaking on the few of the things at chapter 1, and you must also look at the GCR, Google Classroom, and there are other things which are related with today's explanation of few ideas, and then of course related with the deadline that you would be having it. और फिर उसके बाद मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि हमें जो मैंने आपको एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी का मैंने असाइनमेंट दिया हुआ था, वो भी जाहिर है उसकी डेडलाइन मैंने जानबूझ के नहीं रखी थी. उसकी वजह ये थी कि आई वांटेड यू टू ponder on it, work on it. और उसके बाद जाहिर है क्योंकि अभी जस्ट द बिगिनिंग, दीज आर द 6 पेपर्स, और अगर इसको इस हफ्ते तक अगर आपने नहीं किया है तो डेफिनेटली आई विल बी एडिंग मोर पेपर, बिकॉज ये पेपर आप ही के हेल्प के लिए होंगे, और इसी के लिए फिर देन आई विल बी ब्रिंगिंग इन मोर पेपर. यू शुड स्टार्ट डूइंग एंड प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज ये अल्टीमेटली ये जो एक्सरसाइज है इट विल पे यू ऑफ. एंड मे बी सम ऑफ यू हैव an aspiration or maybe desire to go for a PhD, so eventually it is gonna be used over there. So लिहाजा इस एक्सरसाइज को लाजमी तौर पर diligently
हमने seriously और with concentration हमें ये इसको जारी भी रखना है irrespective of the topic of the research papers, and this is not a very cumbersome task. So eventually you will get the hang of it and you will get the idea that how to get along with those concepts which has been explained in that particular PDF. Or maybe you can go on internet and try to read about, or maybe try to read more, or maybe you try to watch videos. So it gives you a little extra, and of course, not little, maybe sometimes more in-depth information about how to write the annotated bibliography and why it is being used and everything. So वो वाला एक काम है, मुझे अभी अंदाजा नहीं है, but definitely वो आप लोग असाइनमेंट वाली जगह पे भी अपलोड अगर करेंगे गूगल क्लासरूम में, that will much better. और अभी फिलहाल मैंने उसको देखने की कोशिश की तो मुझे शायद नजर नहीं आया, मे बी मेरे इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ऐसा हो भी सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप उसे अगर इस वीक तक कर देंगे तो अच्छा है. और फिर दूसरा असाइनमेंट भी मैं आप डॉक्टर दानिश से आई हैड अ मीटिंग, और उसके बाद वो भी मैं आपको डिलीनिएट में कर दूंगा. सो कमिंग बैक, so towards the chapter, and this is what exactly what I'm going to, और towards chapter के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं. और डिस्कस करने के बाद फिर then I'll discuss, because I'll be very brief and I'll just like you to hand over the task, और वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और स्पेशली विद रमजान, और जाहिर है मुझे अंदाजा है कि रमजान के लिए भी आज आपकी मगरिब के फौरन बाद से जाहिर है वो फिर उसकी तैयारियों में पहले रोजे के लिए, तो इस वजह से मैं आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम. आई अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दैट आल्सो. तो उसमें so the introduction to the qualitative research part, and let's start with the definition of the qualitative research. और ये इसको समझाना इसलिए जरूरी है, don't consider that कि ये बिल्कुल rhetorically I'm just trying to go through the book and everything, and you cannot, because माशाल्लाह जिस stage पे आप लोग हैं तो you can also go through that information, but it's just a different angle, different perspective that I'm going to discuss that. So Denzin and Lincoln, they actually had a very good book, and especially John W. Creswell has like been mentioning that book for off and on, maybe in videos and maybe in certain books. और उनकी The Handbook of Qualitative Research, ये बुक मैंने अभी वहाँ अपलोड नहीं किया, आप में से चंद लोग अगर चाहेंगे तो वो मैं बुक भी अपलोड कर दूंगा. That's not a big deal, मतलब किताब का वो इतना कमाल नहीं, वो तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें चंद चीजें जो हैं that's very good, और इसमें there are so many extra things also. I found that book a little bit technical, but in fact good. Somewhere down the road थोड़ी सी आसान बन जाती है, लेकिन शुरू के चैप्टर में a little bit rhetoric, that's a little bit technical, तो इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया था आप लोगों के लिए. So Denzin and Lincoln in their book by the Handbook of Qualitative Research by Sage, and like qualitative, they explain the definition by the standard care. Qualitative research is a situated activity. This is the first keyword, situated activity. So wherever you are, you have to go and you have to find, and there has to be a confinement, not in terms of confinement in char diwari, but situated, there has to be some situation there. कोई ना कोई एक चीज happening हो रही होगी, something like that. So situated activity that locates the observer. So that locates the observer in the world. So that means कि वो जो भी situation हो रही होगी, आप और मैं as an observer, हम actually उसको जाकर देखते हैं, या हम हमारे सामने वो चीज आ जाती है, और वो जिस situation में आती है, जिस context में आती है, उस पे हमारे reactions क्या हैं, ये सारे keywords हैं, reactions, context. So जो इस definition में नहीं है, लेकिन वो Creswell की definition में है, जो बाद में अगले पेज के ऊपर भी है, then we can define that. So that's observer in the world. Qualitative research consists of a set of interpretive material practices. So like it's a set of interpretive. Interpretive means, of course, it's a qualitative nature. Qualitative nature means everybody has their own perspective, their own respective interpretation of the phenomena or the interpretation of the things that we see around us. और उसके इंटरप्रिटेशन को कौन किस तरह से देखता है, और इसी से फिर सब्जेक्टिविज्म या दूसरी चीज़ों का फिर जन्म होता है, और वहाँ पे फिर हम बोलते हैं कि ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, बिकॉज हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है, हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है, और हर कोई इसे अपने तर्ज पे या अपने लिहाज से या अपने पर्सपेक्टिव से इसको या अपने नुक्ता नज़र से जो है वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. So that's why qualitative research is a set of interpretive and material practices. So material practices, or of course there are interpretive and material, means that means there are certain tangibility also.
बिकॉज वो सब्जेक्टिविज्म है तो सही, लेकिन वो ख्याली बात भी नहीं। मटेरियल प्रैक्टिसेस का मतलब है जो उसकी डूइंग्स हैं, या एटलीस्ट उसकी जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स हैं, या उसको काम करने के, देखने के, लिखने के, इंटरप्रेट करने के, और वो उसकी जो चीजें हैं, और वो जो आगे नीचे एक्सप्लेन हुई है, मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो जो चीजें हैं वो एक्चुअली टेंजिबल है, और टेंजिबल से वो प्रूफ के साथ फिर हम उसको या तो कैप्चर करते हैं, या रिकॉर्ड करते हैं, या उसको किसी तरह से किसी एक मेमोरी का हिस्सा बनाते हैं। और मेमोरी का जब हिस्सा बनाते हैं तो वो हमारे लिए फ्यूचर में या तो वो हमारे लिए इंटरप्रेट करता है, या हमारे लिए जो है वो आसानियां पैदा करता है। फिर हम उसी से मदद लेके हम वी कैन एक्चुअली कंटिन्यू फॉरवर्ड और मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू। सो दैट्स व्हाई द वर्ड मटेरियल हैज बीन in a larger context, material practices that make the world visible. और वो जाहिर है फिर जो दुनिया है वो हमें फिर उन्हीं चीज़ों की मदद से हमें दिखाई देती है, और ये सब चीज़ें जो हैं दैट्स द क्वालिटी। अब ये दुनिया जो हमें दिखाई देती है, दिस इज समथिंग, अ सेंटेंस दैट एक्चुअली सेज के जो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च करके वो चीज़ हम दिखाना चाहें तो हम उसे दिखा सकते हैं, और वो फिर दुनिया फिर उस तरह से ही देखेगी। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। फिलहाल अभी हम नॉन एकेडमिक एग्जाम्पल अभी फिलहाल नहीं जा रहे, वरना अदरवाइज बहुत सारे फिनोमिना है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको जो है लोगों ने अगर इंटरप्रेट किया या समझाया या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो फिर दुनिया ने फिर या तो उसको माना या फिर वो नहीं माना। इसमें बहुत सारी बहस है कि वो मटेरियल प्रैक्टिसेस के साथ या इंटरप्रेटिव को कौन किस तरह इंटरप्रेट करता है, बाद तो वो मानते या नहीं मानते। और इसमें पुराना बहस, जो सबसे पुरानी बहस चल रही है, वो क्लेरिक्स और साइंस की है, जो स्पेशली विद रिलीजन और ओल्ड रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, और वो बेबीलोनियंस के ज़माने से जो है एक झगड़ा चला आ रहा है कि साइंस कोई इंटरप्रिटेशन जो है वो मटेरियल प्रैक्टिसेस के साथ वो उसको हमेशा जो है वो सॉर्सरी या विचरी या उसके कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता था, और उसके बाद वो दैट एक्चुअली क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, और कुछ लोगों ने फिर खुदकुशी या व्हाटएवर उनको फिर मारा भी गया। So that actually makes the world visible, and they were visualizing that. So these practices transform the world. Eventually ये सारी practices जो है फिर हमारे लिए जब सामने आती है तो it provides the impetus, or it provides actually the food for our thoughts that actually we move forward based on them. So they turn the world into series of representations, including field notes. Now these are the material practices. हम उनके नोट्स हम लेते हैं, इंटरव्यूज हम कंडक्ट करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, लोगों की जो उनके साथ बीती हुई होती है उसका हम जो है रिकॉर्ड रखने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज भी एग्जांपल है, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, चाहे वो लाइक ट्रांसजेंडर की बात हो, ये सारी चीजें जो है वो आप देख रहे होते हैं, सारी चीजें नजर आती हैं आपको। सो इसमें इंक्लूडिंग फील्ड नोट्स, इंटरव्यूज, कॉन्वर्सेशन, समटाइम्स there are debates and there are conversations also, and what is happening in the world we try to make it visible. अब इसमें बहुत बड़ी डिबेट भी हैं, चाहे उनकी अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में पढ़े ना पढ़े, that's fine. So ozone layer depletion, that was a conversation or debate, and that actually had kept on going and going for so many years. But Al Gore 1997 said to fine इसके अंदर है या नहीं है. He was the most, like, I'll say, active proponent of the let's say the ozone layer depletion, or maybe the green side of, or the depletion of the green side of that. Anyway, so in सब बातों के साथ, in all these things, photographs, recordings and memos to the self, that means कि वो आपके लिए आपको किस तरह से information ये सारी चीजों की मिलती है। अब ये सारी बातें बताने का मतलब ये है कि these are the different aspects and the different ways that material practices that actually qualitative research has, it actually becomes a set of that material practices. So at this level, qualitative research involves an interpretive, naturalistic approach to the work. Definitely, जब उसको इंटरप्रेट करेंगे आप और मैं देखेंगे, मे बी कोई रिकॉर्डिंग या फोटोग्राफ या कन्वर्सेशन आमतौर पे हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या मे बी कोई एक फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं. So we have our own interpretation, which I've already explained, but it's a naturalistic approach, because this is exactly how the nature demands के जो भी मुझे देखें वो किसी एक एंगल के लिए नहीं है. ये दिस इज वन फिलोसॉफिकल थॉट, अनदर थॉट के उसको एज की नजर देकर देखा जा सकता है. वो आज का टॉपिक नहीं है, वो इंशाल्लाह अगली क्लास के लिए टॉपिक है, और अगली क्लास के अंदर भी डेफिनेटली हम इसे बेहतर टाइम के ऊपर रखेंगे, और जो भी होगा उसको मैं आप लोगों से डिस्कस, आप लोगों को इतला दूंगा, और इतला देने भी के लिए भी आपको वक्त से पहले मैं बताऊंगा, नॉट एट द 11th hour.
ताकि वो आप उससे थोड़ा सा गेयर अप भी हो जाए. और I try to be more say logical in assigning the time next class के लिए. So this means that the qualitative researchers study things in their natural settings. So they usually don't try to change anything. They just try to observe, they try to note, they try to record, and they try to, let's say, document whatever they are looking at. They observe obviously natural settings के अंदर they are attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them. That means जो लोग उनको बताते हैं या वो देखते हैं या किसी और ने बताया या खुद उन्होंने देखा, तो वो उसी को they try to make sense of कि ये क्या चीज है, किस तरह से है, जिस तरह उनको नजर आई है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. And again coming back to the word, तीसरी लाइन में लिखा हुआ है material practices that make the world visible. So again with the help of those set of interpretive and material practices they try to make the world. So this was the Denzin and Lincoln phenomenon, or Denzin and Lincoln say approach towards the qualitative research. मैंने यहाँ पे जो कीवर्ड्स वो सिर्फ आपको एम्फसाइज जानबूझ के इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया कि वो सारे कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर कभी आपको डेफिनेशन याद रखने की भी जरूरत नहीं है और उसके अंदर सिर्फ ऑथर का नाम याद रखें एंड द कीवर्ड यू कैन इंटरप्रेट ऑन योर ओन. दिस इज नॉट समथिंग फॉर द एग्जाम और सॉर्ट ऑफ, बट मे बी फॉर द एग्जाम, बट लेटर फॉर anywhere where you can write your own, like a good say comprehensive paragraph or maybe more than that, so you can write and just based on those keywords and you can come up with better interpretation of what your experiences have been. So uski introduction ke liye is तरह से preamble ke liye kahin bhi agar create karna ho to you can do that. So the next one is the qualitative research. Creswell actually proposed he said that qualitative research begins with assumptions and the use of interpretive theoretical frameworks. अब वो assumptions हैं कि कोई basic जो भी हम काम करते हैं उसमें assuming that कि इस तरह की कोई चीज है या इस तरह का मतलब है कि वो जो भी ऑथर जिस तरह से एक्सप्लेन करना चाहता है उस तरह की कोई चीज है और फिर उसको बेस करता है, वो उसको इंटरप्रेट करता है विद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स. और वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स इज डेफिनेटली द idea of the chapter 2 next class, or which we will chapter 2 की जब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव में तो उसके अंदर मैं बताऊँ. इसमें जो फिलोसफीज हैं वो सारी की सारी वो आम तौर पे डरा दिया जाता है और बताया जाता है कि मुश्किल है, इतनी सारी फिलोसफीज उनका पढ़ना जरूरी है. और अनियन डायग्राम का एक जिक्र होता है जो सॉन्डर्स, ल्यूइस एंड थॉर्नेल की किताब के अंदर मेंशन हुआ है. लेकिन अनियन डायग्राम के अंदर वो सारी बातें हैं, उसके अंदर जो काम की बातें हैं जिसमें एक्चुअली जो 3 मेन फिलोसफीज और मे बी 4 द मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये पर्सपेक्टिव है, तो उसके अंदर जो काम की क्वालिटेटिव और एमएमआर से रिलेटेड जो एक्चुअली फिलोसफीज हैं उन पे हम कंसंट्रेट करेंगे और वही एक्चुअली वो सारा का सारा काम करता है. खूबसूरत बात यह है, फॉर एग्जांपल अगर हम में से कोई फाइनेंस के अंदर लेट से आगे जाना चाह रहा है और वो काम करना चाह रहा है और वो आगे काम करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें भी उनकी जो काम में फिलॉसफी या रिसर्च ऊपर लिखना चाह रहे हैं या अपना थीसिस लिखना चाह रहे हैं तो उसकी भी फिलॉसफी चूंकि एमएमआर के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव दोनों हैं तो डेफिनेटली ये जो शॉर्ट ब्रीफ वेरी क्रिस्प treatment of the philosophies and of course interpretive theoretical frameworks which is given in the chapter 2, उसके अंदर बहुत ब्रीफ और बहुत ही टू द पॉइंट बात की हुई है. तो दैट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग. और हम बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिसमें फिलोसॉफिकल हैं जो शुरू में क्लास में जो हमें फर्स्ट क्लास जब आई वाज टेकिंग द इंट्रोडक्शन क्लास तो उसमें एक डायरेक्शन हमें दी गई थी कि या मुझे दी गई थी कि उसको थोड़ा सा आप इस तरह भी देख लीजिए. तो डेफिनेटली दैट वाज आल्सो इन द पर्सपेक्टिव कि वो वक्त आने के ऊपर दरअसल को उस तरह भी एक्सप्लेन किया जाएगा. मैं आई विल ट्राई टू मेक इट इजियर और assimilable for all of you. So coming back to qualitative research begins with assumptions and the use of interpretive theoretic frameworks that those frameworks inform the study of research problems. Again, research problem ki jagah there might be something another better word also, but I'm not in that position to add or say something to Creswell. But usually किताबों में जो लिखा हुआ है वो problem oblique opportunity भी लिखा हुआ होता है. So that's also the right. लेकिन यहाँ पे problem को in a bigger holistic उसको पिक्चर के साथ लिया गया. तो that's why research problems to inform the study of research problems addressing the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. That means कि वो जो लोग हैं आप और मैं वो किसी एक social या human problem को उसके अंदर हम क्या interpret करके अपनी क्या meaning देते हैं और फिर उस problem को discuss करने के लिए और study करने के लिए. So that is actually the whole domain of the qualitative or assumptions of
the Creswell's point of view of the qualitative research. और दायरा ये is backed by the interpretive and theoretical framework. Again, the philosophies जो है वो उसका जिक्र करेंगे. Fine. To study this problem, qualitative researchers use ये वाली problem को समझने के लिए जो भी कौन सी social और human problem है जो actually किसी एक opportunity या problem का हिस्सा होगी. So in an emerging quantitative approach, आमतौर पे use करते हैं researcher और emerging qualitative approach to inquiry. That means कि emerging means that is apt, appropriate, and which is actually considered to be the norm for that particular situation. Again, coming back to Denzin and Lincoln, is a situated system. So situated observation है, तो उसी का तो वो किसी situation के अंदर emerging qualitative approach to inquiry. The collection of data in the natural setting sensitive to people and places under study. और फिर definitely natural setting sensitive to people. क्योंकि natural setting में we don't go and change the setting environment and fictitious and everything. We try to observe as it is. जो भी नजर आता है हम उसको वैसे ही उसी context में लेते हैं. हम अपनी interpretation या उसको biased नहीं करने की कोशिश करते हैं या उसमें कोई bias infiltrate नहीं करते हैं. उसमें सारी चीजें जो है वो हम as it is explain करने की कोशिश करते हैं और उसकी purity को maintain करने की कोशिश करते हैं. That's again the clarity and the coherence within that particular task. और जो भी हम स्टडी करें and data analysis that is both inductive and deductive. So you must be quite familiar with these two kind of words of inductive and deductive because the data leading to a theory and the theory be substantiated by again with the help of the data or maybe rechecking or checking or maybe confirmation, and there are several techniques about deductive and inductive. So usually ये approach होती है लेकिन qualitative के अंदर inductive approach ज़्यादा overwhelming रहती है. लेकिन चूंकि Creswell का point of view जो है वो MMR का है तो लिहाजा उसने inductive और deductive दोनों को यहाँ पर mention करके वो एक complete picture देने की कोशिश की है. So data analysis that is both inductive and deductive and establishes patterns for themes. So again दोनों perspective से जब हम study करते हैं कोई भी problem को तो qualitative researcher जो है वो qualitative approach कोई unique approach अपनाते हैं that's emerging. और फिर उसके बाद नेचुरल सेटिंग में जो है डेटा को कलेक्ट करते हैं. नेचुरल सेटिंग का मतलब है को एज इट इज उसको बायसनेस उसमें नहीं होती और वो उसको डेटा को कलेक्ट करते हैं विच मे बी सेंसिटिव टू पीपल. सेंसिटिव मींस रिलेटेड विद पीपल एंड प्लेसेस अंडर स्टडी और वो जो है उसी कॉन्टेक्चुअल स्टडी के अंदर जो है वो या कॉन्टेक्चुअल वर्क के अंदर उसको डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर डेटा एनालिसिस वो जो है वो इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों और फिर उसके बाद वो पैटर्न्स और थीम्स एस्टैब्लिश करते हैं कि क्या पैटर्न और थीम्स है. ये डाउन द लाइन जो है डेफिनेटली हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे भी. मैं अभी बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में जो चल रही हैं मेरे साथ वो आपके स्पेशली जो कोर्स MMR के साथ है आई एम लाइक डूइंग लॉट ऑफ डेवलपमेंटल वर्क आई एम ट्राइंग टू एटलीस्ट. सो अगर वो कामयाब में हो गया तो फिर आप लोगों के लिए माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी और काफ़ी प्रैक्टिकलिटी जो है वो हो जाएगी. और इट डिपेंड्स ऑन कि अभी I have to be responsive or maybe at the receiving end from the other end. So let's see what I can do on that. Okay, the final written report or presentation includes the voices of participants. Now again, these are the more qualitative words. Voices mean their sayings or how they actually say and what they say and उनका perspective क्या है और उनकी interpretation क्या है या उनका actually उस phenomena को उनका thesis क्या है, लोगों का क्या point of view है. और फिर उसके बाद there is another one that the reflexivity of the researcher जो उसका response जो है या जो researcher है वो कितना responsive है, वो उस पे कितना response जल्दी देता है या उसको absorb करता है या उसको interpret करता है या उसको जो है वो नई shape देता है, कोई theme या कोई नई meaning पहनाता है. और उसके बाद that's a reflexivity of the researcher, responsiveness, and then of course the complex description because usually the phenomena which is available and which is in the natural setting, it requires a complex and deep thought and because background या पूरी जो है comprehensive उसकी study होना जरूरी होती है. So that's why it's a complex description. Complex means not necessarily that it is so difficult to understand or but in terms of complex, that means it has a lot of interpretations or a lot of say angles to cover. So that's why a complex description and interpretation of the problem definitely वो उसकी interpretation को कैसे करना.
Again, in terms of all this, like it's a contribution to overall, अगर ये सारी चीजों का काम अगर literature or if there is a call for change, that means कि कोई नई development या कहीं नई direction की तरफ नहीं है, तो that is actually not useful. So coming back to again explaining and splitting up the lines into and coming back on summing up all of these things. So Creswell said that the qualitative research is actually based on assumptions, and those assumptions are based on certain philosophies, and philosophies are actually the interpretive theoretical framework through which any researcher looks or look at the world और उसमें क्या हो रहा है नेचुरल सेटिंग में, उसको वो देखता है कि क्या चीज हो रही है। फिर उन्हीं फिलोसॉफिकल थॉट्स या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स को साथ लेके, जिसको इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क्स भी कहते हैं, अगले चैप्टर में इसको इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क में बोला हुआ, तो इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क के साथ वो एक्चुअली लुक एट द रिसर्च प्रॉब्लम, एंड रिसर्च प्रॉब्लम इटसेल्फ जो है वो जो आइडेंटिफाई हुआ है वो लोगों ने अपनी मीनिंग और अपने कॉनोटेशन या अपनी जो है उसको उन्होंने मतलब पहनाया हुआ है, और वो लोग उनकी नज़र से जो है फिर लोगों ने जो बताया हुआ है फिर उसको वो प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के लिए जो है कोई एक यूनिक अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो डेटा को नेचुरली जैसा ऑब्जर्व करते हैं, जैसा उसको लेते हैं और उसको फिर उसको डेटा को कलेक्ट करते हैं, और जिस जगह से जहाँ से वो कलेक्ट करते हैं उसकी भी वो पूरी रूदाद या दास्तान लिखते हैं, ताकि वो भी इंटरप्रिटेशन वो बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस होता है, और डेटा एनालिसिस के लिए इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच का किया जाता है। सो और फिर उसके अंदर से पैटर्न्स और थीम्स निकाले जाते हैं, और फिर वो दायरा ये सब चीज़ों के लिए इट्स अ कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग, बिकॉज इसमें लोगों की राय भी शामिल होती है, और अगेन लोगों की राय का मतलब है कि अगेन वो टेक्नोलॉजी के ऊपर चला जाएगा या और दूसरी चीज़ों पे चला जाएगा, तो इस वजह से लोगों की राय शामिल होती है। फिर इसमें रिसर्चर का अपना रिस्पॉन्स भी शामिल होता है कि वो कितना एक्टिवली और स्विफ्टली काम करता है, और फिर ऑफ कोर्स द नेचर ऑफ वर्क इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, सो ये सब काम जो किया जाता है एक्चुअली लिटरेचर में कोई कंट्रीब्यूशन किया जाए, या फिर एक्चुअली कोई ऐसा एक्शन या फॉर एग्जांपल अपॉर्चुनिटी है तो उसके लिए कोई एक्शन ओरिएंटेड है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई पॉलिसी मैटर है या पॉलिटिकल डिस्कशन है, या वो आगे जाके जो है वो क्या उसका सोल्यूशन किस तरह से पेश किया जा सकता है। सो having said that, like this, so this is the slide, and these are the 5 actually approaches जिसको emerging unique approaches मैंने नाम दिया, उनके definitions है। So which qualitative approach best fits your research needs, and this is a very simple thing, और इसमें research focus वाला जो है row आप देख सकते हैं, so there are 5 columns because there are 5 approaches, and this is actually the main core meat of the book Qualitative Inquiry, 5 approaches by Creswell, और फिर इसके अंदर second जो row है that is research problem. So it is very easy to interpret now, or definitely they explore the life of an individual, or that actually tells the stories of the individual experiences, because that's a research problem. और इसके अंदर बहुत सारी बुक्स भी हैं, आपने पढ़ी भी हैं और देखी भी हैं और डिस्कस भी की हैं, और फिर कभी आप लोगों का जो है वो उस पर बहस भी रही होगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जिंदगी के अंदर हैं, जो हालात है ज़िंदगी, हालात हाज़िरा, मे बी बायोग्राफी या बायोग्राफी इज समथिंग मोर देन दैट, मे बी डिबेटेबल एंगल टू दैट. So explore the life of an individual, and that's actually typical in narrative research. और वो narrative research के अंदर फिर किस तरह किया जाता है वो सारा framework है, वो भी अभी आपको लोगों को explain करूँगा मैं. So understand the essence of the experience. The second part, understand the essence of the experience. So there are certain experiences of people which understand the essence of what actually had been the main focus or the impetus, or maybe the main raw material for that experience, or maybe what has been the force behind that existence of that experience of the one has or had gone through. So it actually describes the essence of a lived phenomenon. Lived phenomenon means it is happening there, and we need to explain why this thing happens and what are the things that actually make us experience that particular thing. या आजकल जो बात चल रही है कि मौसम चेंज हो रहा है, और मौसम चेंज होने के बाद मिसाल के तौर पे यूजुअली आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल बिकॉज इंफॉर्मेशन अभी बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं है, but a little bit of it. मिसाल के तौर पे the earth actually has tilted a little bit more, 23 degrees more.
तो जो 23 डिग्री, मे बी 23, आई एम नॉट श्योर, अब इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 23 डिग्रीज की वजह से थोड़ा जो टिल्ट आया है, और वो टिल्ट की वजह से जो है वो मौसम का थोड़ा सा चेंज पूरी दुनिया में हो गया। अब इसके पीछे क्या, जी बोलिए। So sorry to interrupt you, sir. Can we take a break for Maghrib namaz? जी बिल्कुल, आई थिंक 8:50 एक काम करते हैं, तो एग्जैक्टली गिव मी फॉर 5 मिनट्स, और मैं ये स्लाइड में खत्म कर देता हूँ, उसके बाद देन वी टेक अ ब्रेक, निकल या अभी, अच्छा चलें एक काम करते हैं, सो लेट्स हैव अ ब्रेक राइट नाउ, और उसके बाद फिर देन वी कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। Sir, we'll meet at 7:10 like last time. जी बिल्कुल, विल मीट एट 7:10 जी। Okay, sir. Thank you. So I've started the recording again, just to be wanted to inform that, and so sharing the screen again. I'm coming back to the particular slide. So we were discussing like what qualitative approach best fits your research needs. So we had discussed two, but I'll try to go through again so it becomes a part of in a one go. So explore the life of an individual. If the research focus is to explore the life of an individual, why? Because usually the research problem or the opportunity is like tell stories of individual experiences for people, and certain things that may become or highlighted for the maybe for the sake of magnanimity of the character. So usually the narrative search usually helps in developing that kind of research, and usually in shape of the document that actually ends up by the through the hands of a researcher. इसमें फेमस एग्जांपल है, आप में से सिर्फ एक सवाल जल्दी से पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग स्टैनले वॉलपर्ट को जानते हैं? Anybody have an idea about it? Stanley Walpert. No, sir. No, sir. Okay, मैं सवाल दोबारा से दोहराता हूँ, उस ऑथर का नाम बताइए जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बायोग्राफी पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखी, और फिर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना पर भी कॉम्प्रिहेंसिव किताब लिखी। उन ऑथर का नाम बता सकते हैं? So again, the name of the person was Stanley Walpert. So जिस पे जिन्ना मूवी और फिर बहुत सारी चीजें, ज़्यादा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे तो नहीं बनी, लेकिन जिन्ना मूवी के एक्सेप्ट और फिर उस तरह की बहुत सारी चीजें। Anyway, so explore the life of an individual, tell stories of individual experiences. इसी तरह से नेल्सन मंडेला। Oh, okay. I never thought कि गाड़ी इतनी खराब स्टार्ट होगी, लेकिन अगर माइक ऑफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, और फिर उसके बाद बेहतर होगा। Tell stories of individual experiences, and this is a narrative research. Another one is understand the essence of the experience, and that experience in terms of phenomenological research, that means something is happening, a phenomena is happening there, और फिर उसको explain करना, उसको समझना, उसकी comprehensibility जो उसकी साथ है, और उसको समझने के बाद उसको explain करना, that describing the essence of a lived phenomenon, what is happening in the world. Phenomenon may not be a character, but maybe sometimes a natural happening or natural event or something that is developing, और बहुत सारी से जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम किया था। अब इसी के अंदर लाइक साइंस से रिलेटेड है आप, और मे बी इनडायरेक्टली हिग्स बोसॉन। again, can somebody recall who was Higgs boson? Yeah, Higgs. Sir, he discovered the dark matter. Yes, exactly. So that's why the more of the aspect that was the phenomena at that time, the more of the Stephen Hawking has been working in the more of the phenomenological research. So this is exactly what his has been experience, and this is how he wanted to interpret and would like to highlight that how he actually sees the world, irrespective of the special things that actually happened to him. So the idea is the grounded theory research, and usually the research focus is develop a theory grounded in data from the field. Now this is something deep rooted
something is hidden within the minds of people. Now, this is again something hidden within the minds of the people, something which is hidden and deep rooted minds of people. That means they grounded deeply. So that's why the came actually been attributed or ascribed to the idea of the grounded. So grounded deeply. So that's developing a theory grounded in data from the field. Field means people available, or maybe the voice of participants, or maybe hearing them loudly, and how actually they tackle a problem, how actually they confront an opportunity usually, and they try to think or capitalize on an opportunity. There are so many examples also, but I would just like to be a little bit, say, superficial right now, or on the surface, just to describe that. So ground a theory in the views of participants. So ground a theory, that means what is going on in the minds of the participants, to whom actually we like to make them as participants of our survey or interview. And what is going on, we try to explore that, and then we try to base or to give it a shape as the theory within their own mind, and we try to develop or shape a theory. So there's so many development in that. Recently, I've been working with one of a person for, she was working, she is about to be a PhD, and irrespective of the name, like, she had been working with the Uni Castle, Germany, and she has been working in Bogota. And Latin American, she was trying to develop something, and she was doing a research in grounded theory, and she was wondering how the waste management has been done with the remote villages of Bogota. So she was trying to do the research from the Germany, and I had been the part of that colloquium, and I was just like trying to listen what she wanted to do. And then she explained that she wanted to hear that since there is a waste management issue and a lot of industrialization which happens, or comparatively, which never used to be there, but now the Latin American places or Latin American cities are facing that issue of maybe the waste and the disposal of waste and waste management issues. So that's why she was just trying to sound the idea, but unfortunately people were reluctant to voice their concerns and to give it a meaning or a shape. So that's why she discussed the problem. Then I tried to say offer a kind of an approach, a different approach, because she was ahead of me in the work. So we somehow resorted to the idea of working combined with India, with Pakistan, and with the Latin American, because there are certain kind of similarities that she found, that there are certain things. But that was, in fact, जो बताने वाली बात है वो सिर्फ ये थी कि जो grounded theory में she was trying to work है, she was trying to develop a theory कि आम तौर पे इस तरह के जो दूर दराज इलाके हैं और छोटे इलाके हैं, छोटे इलाके का मतलब है कि वो जहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं भी है, लेकिन फिर still you find means, you find waste and waste management की उनको समझ है, literacy है या नहीं है. So that was grounded a theory in the views of the participants कि वो उसको कैसे करते हैं. ज़्यादातर लोगों ने फिलहाल she was not encouraged and she was not happy with the results, because वो बहुत कम लोगों ने उसको इंटरव्यू वहाँ दिए. और फिर उसके बाद I don't know what will happen next, मुझे अभी पता नहीं है इसका, लेकिन भारत she was trying to work on a grounded theory research. Okay. Sir, sorry, can I rectify myself? Yeah, please. Higgs actually discovered a particle that actually explains the origination of mass of subatomic particles, which later helped at the CERN project, which later helped to discover the antimatter, that is the dark matter. Exactly. The dark matter was discovered by Fritz Zwicky. Okay. And how about like what actually happened in CERN after Higgs like discovery? CERN. Have you read CERN that? was yes, CERN is basically a project where the scientists made this huge tunnel that went across many kilometers, and they tried to collide the particles at the you could say the light speed. Yes. So that they hit each other in from the opposite directions, and the explosion from that hitting, which is actually not visible by naked eye, Yes. that explained how the Big Bang might have occurred initially. Yes. So this is just to say in a layman's view, but that actually they try to find out. For example, the theory is that the universe came from nothing. So how can nothing generate mass?
So that's Yes. what Higgs discovered, that there is something, that particle that is known as the Higgs particle as well, I guess. So that Yes. gives the subatomic particles like nuclei, like the protons and neutrons and deuterons, their mass. Yeah, and mesons What also. was that? Nothing yet. Yeah. So it was something like that. It's very interesting. Thank you very much for highlighting that. Okay. And very interesting is if you relate with Higgs and with Dr. Abdul Salam, then there's something more deep. So अभी फिलहाल हमारी वो बहस नहीं है, लेकिन good, माशाल्लाह. Yes, exactly. So yeah, because उनसे वो बहुत सारी related चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं. तो वो आमतौर पे जो collision of the super collision actually made or make the things That's why they call it disappear. super collider. Yeah, super collider. So make things disappear actually. So वो अभी फिलहाल वो हमारी बहस नहीं है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे. But anyway, so was trying to come up with the lived phenomenon, और वो मैं बात कर रहा था फिर उसकी इसलिए. तो इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ भी है और डेवलप भी किया हुआ है और बहुत सारी चीजें और भी हैं. खैर. So I was coming towards now grounded theory. I just finished and I'll come back to describe, and thank you very much for that. So describe and interpret a culture sharing group. And now this is again culture sharing group, a group of people, maybe the whole nation, or maybe a certain area, maybe a geographic area, maybe a confined area also. So they're actually voices, or maybe how they interpret life and how actually they try to give meaning to the norm of their own surroundings, and which may be different and unique. So that kind of a study are describing and interpreting the shared patterns of culture, shared patterns of a culture of a group, that means how they share, how they interact with each other. So there are many peculiarities. I don't want to go into details because that will actually extend the discussion beyond. There's so many things. For example, like the Chinese Muslim province in China, or maybe Uyghur, or maybe not because of like there was a problem, an issue, but there was something very peculiar, maybe uniqueness in that, and maybe something regarding the way you have acknowledged yourself, or maybe accustomed, or maybe have acquired the knowledge about Kalash in Pakistan. So that was the typical kind of a study, and which is of course very self-explanatory if you look at the name of that kind of research, or ye ethnographic research. So usually, Sir, I have a question. Please boliye. Sir, when you talk about the culture sharing, do you mean overlapping, or shared patterns means overlapping of patterns? Yeah. Because, Okay. I mean, in our scenario, for example, Christians are living with us, Hindus are living with us as Pakistanis since a long time. Yeah. And their culture is ours. Like we share almost the same culture socially, but not religiously. Yeah. So how do you say I fully share patterns? first of all, this is, yeah, I understand that. So actually there is an overlapping, or I would like to say that's not overlapping. The commonality usually is in the middle, and usually the uniqueness is at like the extreme margins, left and right. So you did the study of that extreme margin that actually interpret the patterns, or the kind of a living they try to live, which may be unique, which may not be more say shocking or some sort of, no, but actually unique, or maybe their interpretation of the things they usually look at, the general holistic picture about the culture they live in, especially in Pakistan, the different religions. So they have a general perspective जो सबका common है, वो बिल्कुल ठीक है, I understand that. लेकिन अगर उनकी स्टडी करनी है और उनकी कोई peculiarity को स्टडी करना है, और उसके बाद से हिसाब से, मिसाल के तौर पे I was trying to do once research, अभी इस underway, अभी मैंने उस पर काम शुरू भी नहीं किया, but the topic पे कुछ चीजें मैंने collect की थी, लेकिन I wanted to do this, and that was that does religiosity impact the shopping behavior, or especially with the three religions primarily, or maybe two religions, जो है क्या इनका shopping behavior या shopping style या इनका shopping like pattern क्या different है या नहीं है. So but my main concern was doing the qualitative, because religiosity के जो आमतौर पे construct हैं या दूसरी चीजों को use करना था वो था, लेकिन अगर qualitative बात हो तो फिर जाहिर है वो भी की जा सकती है. You are right, इसमें ओवरलैपिंग भी है, और प्लस ओवरलैपिंग वाला हिस्सा तो एक्चुअली कॉमनैलिटी हो जाता है, और वो कॉमनैलिटी वाली चीजें जो है वो इट शुड बी एस्क्राइब टू द आइडिया ऑफ द कॉमनैलिटी, और जो भी उसमें कॉमन चीजें उसके तरफ डिस्क्राइब करते हैं. तो यस, ऐसा भी है और ऐसा हो भी सकता है,
बट स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही चीज है, उसके अलावा बाउंड्री पे भी जो रह जाता है उसको भी डिफाइन करना, और आमतौर पे जो लोगों को फिनोमेना या लोगों को जो चीजें नहीं पता है उसके पे इंटरप्रिटेशन या कोई ऐसी चीजें, इसमें कोई खास वो नहीं है, लेकिन असल चीज है कि उनकी जो पैटर्न है, उनका कल्चर का जो नॉर्म्स हैं, और वो बहुत डिफरेंट है। इवन सब कल्चर्स विद इन अ कल्चर, लोग हॉफस्टीड का जो फ्रेमवर्क है नेशनल कल्चर, और हॉफस्टीड के फ्रेमवर्क के बाद जो दूसरे हैं टॉम्पेनार्स। सो टॉम्पेनार्स अगेन 1967-63 का जो टॉम्पेनार्स का काम है वो हॉफस्टीड के साथ मिलकर अलग से उन्होंने इंडिविजुअली किया। तो उन्होंने नेशनल कल्चर के अलावा जो है वो उन्होंने बात की कि सब कल्चर भी जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया। तो सब कल्चर में इवन जो है पैटर्न्स, इवन द सेम रिलीजन या जो भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बात, के वहाँ पे भी डिफरेंट होता है। फिलहाल अभी यहाँ पे जो मकसद समझाने का वो माशाल्लाह आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि वो एथनोग्राफिक रिसर्च है जिसमें डिस्क्राइबिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कल्चर शेयर ग्रुप, और इसके अंदर ये ग्रुप सिर्फ हमने रिलीजियोसिटी पे ले लिया। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा ग्रुप है या ग्रुप ऑफ पीपल है या हमारे कल्चर के अंदर ऐसा एग्जिस्टिंग कोई एक सेट ऑफ पीपल है जिनका अपना कोई एस्पिरेशंस है, अपनी डिजायर्स, अपनी उम्मीदें, उमंगें, व्हाटएवर जो उसको हम नाम दे सकें, लेकिन उसके बाद उनका पैटर्न क्या है, उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनकी जो चीजें, वो कल्चर किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके बारे में ज्यादा हमें नहीं पता होता। बेशुमार हमारे दरमियान ही एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन वो फिलहाल आई डोंट वांट टू नेम इट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। और वो शायद आप ही के यहाँ से वो जो काम आप कर रहे हैं उसी के हिसाब से हो, तो उनकी वॉइस के लिए एथनोग्राफिक रिसर्च का भी हिस्सा लिया जा सकता है या उस पर बेस किया जा सकता है। बट दिस इज जस्ट एन हिंट फॉर यू, बट नॉट एग्जैक्टली, बट आई वो उसको फिर थोड़ा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से उसको डायरेक्शन दी जा सकती है। ओके, द लास्ट वन इज द केस स्टडी व्हिच इज वेरी सिंपल, बट अगेन this is like the develop an in-depth description and analysis of a case of a multiple cases, maybe depend on the multiple cases को discuss करते हैं। कई मतलब human resource management में usually the best practices वाली जो चीज है वो आम तौर पे जो industry standard है और best practice जो industry benchmark set किया जाता है, तो वो best practices और benchmark जो set किया जाता है उसमें holistic picture of the human resource management best practices है, वो आमतौर पे केस स्टडीज को देखने में आया जिसमें वॉन ग्लीनो की रिसर्च और बहुत सारे लोगों की जो बहुत जबरदस्त रिसर्च है और Sir, पुरानी है। जी प्लीज बोलिए। sir, मैं have you read Dick Had Dick? आई एम सॉरी, Dick Had Dick, he's a renowned British sociologist with his specialty in नहीं subculture. मैंने ये नहीं पढ़ा। आप अगर उसको कैन यू राइट डाउन इन द चैट, बिकॉज आई कैन सी दैट। मेरे शायद मुझे सुनने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। अच्छा, हम एक काम करते हैं, पहले लेट मी फिनिश क्विकली, उसके बाद इंशाल्लाह फिर वी कैन हैव अ लिटिल बिट टाइम ऑफ दैट डिस्कशन। सो Okay, sir. yeah, thank you. So develop an in-depth description and analysis. So provides an in-depth understanding of a case or a cases. That means case means maybe a person, but maybe organization or maybe a situation in terms of the case. और आमतौर पे मेडिकल में केस एनालिसिस होते हैं और इसमें जो खास तौर पे टेक्नोलॉजी के अंदर केस हिस्ट्रीज होते हैं जिसको यूज केसेस भी बाद में नाम दिया। शुरू में यूज केसेस का नाम आजकल यूज हुआ, बट शुरू के अंदर लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 90s के अंदर जो है वो केस हिस्ट्रीज के नाम से वो कोई इंटरप्रिटेशन या उसका कोई डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पजेस के लिए जो है वो आमतौर पर सेल्स या मार्केटिंग में इस्तेमाल होता था कि एप्लीकेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी है वो कहाँ की है, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी। अभी बहुत जो है सोफिस्टिकेटेड हालत में, उस जमाने में बहुत ही क्रूड फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही थी। मिसाल के तौर पे आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राउजर बहुत था, फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वाज नॉट अप टू दैट मार्क। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो डेवलप हो रही थी, खासतौर पे ब्लूटूथ की जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ वो चीजें थी वो शुरू की टेक्नोलॉजीज के अंदर वो जो है वो इसको केसेस, यूज केसेस, केस हिस्ट्री और इस तरह से जो इस टेक्नोलॉजी को बेचा जाता था, या जो एक्सपेंसिव था इक्विपमेंट या टेक्निकल इक्विपमेंट था, तो उसको वो आमतौर पे यूज केस या केसेस के साथ वो डेवलप करके सिनारियो डेवलप करके एक्चुअली, और उसके अंदर विद पिक्चर्स, समटाइम पिक्टोरियल्स, समटाइम विदाउट पिक्टोरियल्स, और वो उसको जो आमतौर पे वो किया जाता था, उसको एक्सप्लेन किया जाता था। तो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। अब नाउ बेस्ड ऑन दिस आप लोगों का जो काम है और अगले हफ्ते तक आप लोगों को जो चीज जमा करानी है और वो ये है कि आप लोग अपना अपना रिसर्च पेपर जो लिखेंगे इस कोर्स में, जिसमें डॉक्टर दानिश ने आप सब लोगों को जो कहा है कि वो अगले हफ्ता एग्जैक्टली बाय दिस टाइम, so by this time means of course जो हमारी क्लास का टाइम होगा वो I'll let you know, but that is 20th of April. Then you need to finalize your topic and you need to specifically like आपको जो है इन पांचों एस्पेक्ट से आप उसको देखना पड़ेगा
और इसको देखने के लिए जो है वो आप अपना कोई भी एक एरिया चूज कर सकते हैं जिस फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द असाइनमेंट और द प्रोजेक्ट जो इस कोर्स का है। तो उस रिसर्च पेपर के लिए आपको ये टॉपिक आपको पिक करना होगा और उसको अप्रूव करवाना होगा। डॉक्टर दानिश विल बी पार्टिसिपेटिंग एंड विल बी अवेलेबल नेक्स्ट वीक, और 20th को वो हमारे साथ होंगे और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, तो वो डेफिनेटली ही विल बी। आप लोग सब जो हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन जो भी है वो, या आप जो भी सारी चीज़ें आप जस्टिफाई करेंगे डॉक्टर दानिश के सामने, तो फिर उसके बाद मी एंड डॉक्टर दानिश विल लिसन, और फिर कोई अगर सजेशन या गाइडलाइंस की जरूरत भी पड़ेगी तो हम वो भी आपको डिलीनिएट करेंगे। इन 5 टॉपिक में से इसको कोई भी आप स्पेसिफिक एरिया अगर चूज करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है आपको एक्स्ट्रा रीडिंग की जरूरत पड़ती है। हमारी किताब में जो है उसके अंदर ऑलरेडी सेमिनल बुक्स हैं, दे आर ग्रेट बुक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किस साल का एडिशन है क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में, कहीं चैप्टर शुरू के चैप्टर में बहुत डिटेल दी हुई है और कहीं जो है वो बीच में जाके ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। आमतौर पर प्रीएम्बल जो इंट्रोडक्शन के अंदर जो एक्सप्लेन किया हुआ होता है, तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं जिसमें आपको पढ़कर, ज़ाहिर है पूरी किताब का पढ़ना वो एक फिलहाल एक असाइनमेंट के लिए ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके लिए एक रीडिंग मटेरियल ज़रूर होना चाहिए। So what I have done is like I made available with suggested readings by on every kind of approach, like narrative search, phenomenological research, or grounded theory research, and ethnographic research, and case study research. So now here comes, for example, like key book reading जो है उसके अंदर narrative research के अंदर Clendenin, like Gene Clendenin की जो engaging in narrative inquiry, if you go to GCR Google Classroom, so you'll find कि वहाँ पे मैंने इसको upload कर दिया इस किताब को, same edition 2013, and of course in this book Gene Clendenin articulates her intention to return to the question of actually what it is, and that's narrative inquirers do. Return to the question of what it is that narrative inquirers do. Yeah, narrative inquirers and actually what they try to do in their research. So that's page 18 of chapter 2, which is just a hint for all of you that go through that. It's noteworthy for her practical guidance, especially education में उन्होंने किया हुआ, और पूरी किताब का टाइटल जो है वो पूरा यहाँ नहीं लिखा हुआ है, पूरी किताब का टाइटल जो है वो Clendenin का with the youth and young children. So especially guidance using the detailed descriptions and examples of educational research, what it means to think and act narratively, और ये सारी चीजें आपके लिए हेल्प के लिए हैं। इसी तरह से Reisman are like CK or narrative methods for human sciences. So Catherine Reisman uses cross-disciplinary examples actually, so alongside detailed descriptions for 4 specific methods of narrative analysis: thematic, structural, dialogic and performance, and of course visual. ये usually आमतौर पे एक साथ जब दिए हुए होते हैं इन 5 अप्रोचेस में, तो इसमें ये भी अलग शामिल कर दिया जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन इस किताब में डेफिनेटली ये चारों बातों को जो है वो अलग से थीमेटिक एनालिसिस और स्ट्रक्चरल एनालिसिस और फिर नैरेटिव के थीमेटिक क्या है, तो इसको भी आप देखा जा सकता है। ये सब आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए, रिसर्च पेपर के लिखने के लिए। सो ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल है जो वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, और स्पेसिफिक बुक्स है। सो ये अपलोड करने के लिए ताकि आप इसे देख सकें और अपना टॉपिक बेहतर तौर पे डिजाइन कर सकें। अभी तो टॉपिक सिर्फ आपने देखना है कि व्हाट डू यू लाइक टू डू एंड लाइक टू राइट अ रिसर्च पेपर एट द एंड ऑफ the semester. So unique contribution is the discussion of visual analysis. This is one of my favorite also, by the way, and how images can be used within qualitative research. This is one of the very unique and very good aspect of it. इसमें बहुत सारे angles हैं, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं उसको खुद जानबूझ के I don't want to bias your thoughts over here. So आप इसे देख सकते हैं. And then phenomenology के अंदर Mustakas and like phenomenological research methods. So Clark Mustakas contributes a description of heuristic process. So that's the combined algorithm in terms of phenomenological analysis is practical instructions in the systematic interpretation of interview transcriptions. Transcripts is helpful extracting themes common across interviews or unique to an interview and then creating a conceptual link. This is a wonderful. It's an old book, but it's a wonderful. And then there are other also coding schemes and everything. Saldania. So वो भी किताबें बाद में आएंगी, वो I'll let you know. Saldania has been very prominent author, लेकिन वो अवेलेबल I'll make it. ये सारी चीजें अवेलेबल करने का ये मतलब आपको ये नहीं है कि आपको ओवरबर्डन कर देना है, ये है कि अगर इफ यू लाइक टू गो इन दैट डायरेक्शन इन फ्यूचर, सो आपकी बुक शेल्फ पे ये चीजें मौजूद होंगी, तो यू विल ऑलवेज फील एम्पावर्ड और आपको ज्यादा बेहतर फील होगा, ताकि जितना भी काम कर सकें उसको कम से कम देयर हैज टू बी बैक्ड बाय सर्टेन
good literature. So you can go ahead with that. So Van Manen and phenomenology of practice, meaning giving methods in phenomenological research and writing. So again, describes the evolution. He describes the evolution of key phenomenological ideas, presents a range of methods, and discusses current issues. Among the key contribution in his summary of 7 criteria for appraising phenomenological reporting. So this is again a very deep. Just go through, browse through, and see if you want to go with the phenomenology work. So phenomenology usually entails the description of a lived phenomenon that actually you see, you observe, or maybe you try to you experience, and then you like to go deeper and try to explain what is the reason and cause behind it. So usually that happens like that. So grounded theory, which I've already highlighted. I've already uploaded the presentation which I'm going through. ये सब कुछ वहाँ मैंने आपके लिए पहले से ही कर दिया ताकि आपको कभी handicap feel ना हो. मैं कोशिश मेरी ये ज़्यादातर यही होती है to make everything available for all of you. और ये आपका हक भी है और आपको ये चीजें मिलनी भी चाहिए. So in this new edition, the book Constructing Grounded Theory, like Kathy provides additional examples from varied disciplines and professions, as well as reflection from scholars about using grounded theory. So features of the second edition include further details related to the coding and writing processes, including guidelines and examples. So there are a few many examples, but there are a few specific areas where actually she highlighted about how to use or the perspective from the different scholars, what they say about the grounded theory. This is a wonderful area to look at. And then of course, one of the Corbin Strauss, one of the very famous books. I've added the 4th edition to all of you. And usually there are multiple editions available, but I wanted to go with the 4th edition because it's highlighted. So a new pedagogical feature of the 4th edition by Julie Corbin and Anselm Strauss. So the insider provides viewpoint for former students and colleagues to enrich the reading experience, because yes, that was substantiated or in fact supported by their students. And analyses and processes usually they're given, like how to do the grounded theory and what is students' perspective, and usually the first-hand problems or first-hand opportunity or first-hand hindrances they actually face. So usually is some part of their own voices are also been interpreted there. So another one is ethnography. Fetterman, let me admit this, the second book, Walcott, Ethnography, a way of seeing, I could not find it. So maybe down the line, if I can find it, I'll share with you. ये मुझे नहीं मिली, और मैं डेविड फटरमैन की जो बुक मुझे मिली वो मैंने एथनोग्राफी स्टेप बाय स्टेप, और इसके अंदर दूसरी और ऑथर्स की भी हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैंने उसको नहीं किया. अगर और मुझे बेहतर कोई किताब मिली, वॉलकॉट की किताब चूंकि मैंने देखी नहीं है अभी फिलहाल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे अंदाजा नहीं है कि फटरमैन को देखने के बाद जो है मुझे ज़्यादा बेहतर अंदाजा अब हो जाएगा कि मुझे कौन सी किताब, अगर कोई और ऑल्टरनेटिव है या नहीं है. या वॉलकॉट के बारे में आई विल ट्राई टू रीड द रिव्यू समवेयर, कि अगर वो है, या आप में से किसी को अगर मिलती है तो जरूर मुझसे शेयर कर लें, और ये हम सब से शेयर कर लें, दैट इज अ बेटर वर्ड. सो David Fetterman offers discussion about the basic features of ethnography and the use of theory. The chapter on anthropological concepts provides a useful connection between the cyclical processes of acquiring ethnographic knowledge in human life, more of the sociology of anthropology. And again, that's the foundation for sometimes the birth of the organizational behavior, or maybe certain other aspects in the business studies have to provide the link or the connection, have to deep rooted connection in there. So because sociology, psychology, and anthropology usually the birth platform for the human resource management. So this, along with the analytical strategy described in chapter 5 of that particular book, makes this resource required reading. So usually Creswell have highlighted few of the things, and usually it's in front of you. So Walcott, I could not find, I cannot comment on that, but this is again given by explained by say Creswell. So I just presented it that. Case study, Stake. Again, this is one of the famous book by Stake, and so usually it was supposed to be in a different context, but today I was going through the book, so I found a different book than Stake, because I thought that I had the old book of Stake, and which was something different, but today, in fact, the actual book I found that, so I shared with you. I have not gone through that, but there was something different, very peculiar, Robert Stake.
Through this personable style, Robert Stack offers insight gained from experience along with illustrative examples. Since I've not gone through the book, I may not comment more while just reading it. So the book reads differently than a typical text, emphasizing the art involved in conducting a case study and the role of researcher's intuition. Since I've not gone through this, I may not comment more on that. So Yin RK, again, Yin RK has worked with a few more of the authors, two or more, maybe Malcolm McDonald. So usually is famous currently, especially in the research case. And अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, वेरी सिंपल, और वो ये है कि आर यू अवेयर ऑफ which case study has been included in Philip Kotler's book recently, which is about to start? Any idea? Does somebody have an idea? Which Pakistani organization? Sir, अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम सलाम. सर ये मिजान बैंक की जो है आई गेस स्टडी जो है उसको ऐड कर रहे हैं वो. Yes, मिजान बैंक को सेलेक्ट किया. जी बिल्कुल, माशाल्लाह, वेरी गुड. मिजान बैंक. बिल्कुल. मैं अच्छा, इससे पहले जो दो स्टडीज थी वो उन्होंने ऐड नहीं की, लेकिन दो स्टडीज हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में और हार्वर्ड में पढ़ाई जाती हैं. तो वो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के मुझे वो मेरे पास अगर मुझे मिल भी जाएंगे वो केस स्टडीज, तो वो आपसे शेयर करूंगा. बहुत अच्छे से मैंने उनको तलाश दोबारा नहीं किया, समवेयर डाउन लाइक इन माय हार्ड डिस्क. तो वो दो ऑर्गेनाइजेशन, TCS and one is student biryani, I guess. नो नॉट स्टूडेंट बिरयानी नहीं है, दैट वाज स्टूडेंट बिरयानी का. अच्छा है तो मुझे इसके बारे में पता नहीं ऑनेस्टली. TCS का is a paid version available on HBR. जी नहीं, वो तो आमतौर पे TCS का तो ठीक है. वो लाइक देयर इज अनदर वन एंड दैट वाज मिल्क पैक, and when milk pack was about to do the joint venture with Friesland Holland, or whether they were about to do the joint venture with Nestle Switzerland. So now you know कि उनका joint venture जो है वो किन से हो गया. 79 का केस है, 1979 का. So that was a milk pack that was being taught and extensively in Harvard. Well, anyway, that's good. Mashallah, mashallah, good. So Robert Jane adds breadth and depth to this new edition, the end of the chapter tutorials, with emphasis on system procedure for generating reliable findings and valid interpretations. So all of the case studies and everything. So this is usually the end of it. Now, coming to the end of it, I would request you to pinpoint to yourself or mark the area where you like to work among the 5 approaches of that, and or maybe you like to think of a topic first. कि रिसर्च ऊपर आप क्या लिखेंगे, और उसके ऊपर जो है रिसर्च पेपर का टॉपिक अप्रूव करवाना है अपने अगले हफ्ते तक. इसमें ये कोई बहुत बड़ा तो वो काम नहीं है, लेकिन दायरा ये सारी रीडिंग्स को देखकर आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है. और कुछ रिसर्च पेपर्स भी अगर आप जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं तब भी आपको मिल जाएंगे. मैं एक्स्ट्रा कोशिश करूंगा, वादा आपसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ तो बिकॉज अब मुझे भी पता नहीं है पहले रमजान के बाद से क्या बिजी शेड्यूल रहता है, किस तरह से रहता है. लेकिन मेरे दिमाग में भी आइडिया है कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट ये करूँ आप लोगों के लिए मजीद, कि कुछ रिसर्च पेपर जो हर एक पे, चाहे फिनोमेनोलॉजी हो, चाहे वो ग्राउंडेड थ्योरी हो, एथनोग्राफी हो, नैरेटिव सर्च हो, उसके ऊपर जो वर्कबल रिसर्च पेपर जो नए हैं या उसके ऊपर लोगों ने किस तरह के टॉपिक पे चूज किया, तो 1-2 पेपर्स में अवेलेबल भी करूँ ताकि आपको थोड़ा सा आपको होराइजन और माशाल्लाह डेवलप हो जाए, जो ऑलरेडी डेवलप है, तो उसको बेहतर आपको अंडरस्टैंड करने में या टॉपिक चूज करने में मदद करेगा. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, नो प्रॉमिसेस, बट लेकिन फिलहाल ये रीडिंग मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी, तो इसमें भी आप देख के थोड़ा और देख सकते हैं और कुछ थोड़ा सा खुद आप एक्सप्लोर कीजिए. रिसर्च के बहुत सारे एंगल्स मैंने अभी आप लोगों को जो सिर्फ सर्चिंग और दूसरी चीज़ों की जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया. मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो अभी आप लोगों की सर्चिंग के लिए आप क्या टूल ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करते हैं. तो मैं सिर्फ अगर मुझे थोड़ा सा बता देंगे तो थोड़ा सा मुझे समझ में आ जाएगा, तो फिर मैं आपको और भी, ताकि मैं फ्यूचर के अंदर भी कोई चीज़ अगर मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करनी है तो मैं बेहतर कर दूंगा. तो आमतौर पे कौन सा सर्च इंजन आप लोग अपने रिसर्च पेपर्स या रिसर्च के लिए इस्तेमाल करते हैं? कैन समबडी से फ्यू नेम्स, अगर कोई एक से ज़्यादा इस्तेमाल करता है? Sir, your voice is quite low. अच्छा जी, मैं ये बोल रहा था कि लाइक विच सर्च इंजन आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी रिसर्च के लिए, प्राइमरीली कौन से सर्च इंजन्स को इस्तेमाल करते हैं? आई जस्ट वांटेड टू नो द नेम्स. गूगल स्कॉलर को सर ज्यादा यूज करते हैं. अच्छा, और अगर ज्यादा गूगल स्कॉलर को करते हैं तो अल्टरनेटिवली कौन सा दूसरा आप जो सेकेंडरी तौर पे इस्तेमाल करते हैं? Sci-Hub is not a search engine,
Okay, but it's For actually research It articles here. provides some articles. You yeah, can get लेकिन articles from there. जी सर्च इंजन में अभी ज्यादातर जो है गूगल सर स्कॉलर पे आप सर गूगल का ही इस्तेमाल होता है सर ज्यादा। अच्छा कोई बात नहीं, दैट्स ओके, मतलब कोई माशाल्लाह गुड। सो देन आई वुड लाइक टू, ताकि आप इसी अगले हफ्ते तक और भी थोड़ा सा आप लोग अगर टॉपिक पिक करते हैं तो और भी हम बेहतर तौर पे थोड़ा सा। तो सर सही, और जो सर्च इंजन हैं उनके बारे में कुछ हमें आइडिया दें सर थोड़ा। बिल्कुल, अच्छा देखें बड़ा आसान है। मिसाल के तौर पे अगर गूगल स्कॉलर को अगर आप देखते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ नाम बता देता हूँ, वो आप देखिए। और उसमें सिमेंटिक स्कॉलर भी है, सिमेंटिक स्कॉलर इज वन वर्ड। ठीक है। अच्छा, देन अनदर वन इज साइंस डायरेक्ट, एल्सेवियर का साइंस डायरेक्ट है। आई मीन गो एंड हैव एन लाइक अकाउंट देयर, और उसको भी रखें, और उसके बाद वो नोटिफिकेशन भी आपको भिजवाता है। ठीक। And तो पहला वाला another क्या बताया था, फर्स्ट वन क्या बताया था सर आपने? एक Sir, तो can you डायरेक्ट check the chat? I wrote the semantic spelling there. semantic scholar. Is that correct? I'm sorry, I'm not hearing you properly. Can you speak a little louder so I can Sir, hear? in the chat window, I wrote the spelling for semantic. Can you check, please? Yeah, what I'm doing, I'm sharing my screen, and what I'll do, I'll share you that will go directly over there in that browser, just quickly for all of you. सर साइंस डायरेक्ट के लिए कंप्लीट एक्सेस तो हमें नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए एथेंस पासवर्ड वगैरह रिक्वायर्ड होता है। I didn't say that you should go and download the paper. For downloading paper, Science Direct, you require Athens password. But to explore and to search, you can use it freely. So ये है एक्चुअली तरकीब, वो इसलिए हमें वो थोड़ा सा डूबियस अंदाज में वो हमें वो लोग करते हैं, तो इसलिए हम आमतौर पे मैं खुद धोखा खा जाता हूँ। तो यू आर राइट, लेकिन वो एक्चुअली हमें डाउनलोड नहीं करना है, डाउनलोड हमें साया से ही करने होंगे। और लेकिन वहाँ से सर्चिंग बड़ी आसानी से हो सकती है, और सर्चिंग के बाद जो है फिर हम इसको और ज़्यादा अच्छी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और फिर ज़्यादा वो DOI नंबर आ जाता है, तो DOI नंबर आने के बाद जो है हम उसको बड़ी आसानी से अपने एक मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दैट वाज एक्चुअली द पर्पस ऑफ जी उसको यूज़ करना है। मैं अभी यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, मैंने शेयर कर लिया। और दिस इज अ सिमेंटिक स्कॉलर, आप लोग सब स्क्रीन देख सकते हैं सिमेंटिक स्कॉलर? जी सर, नजर आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्क्रीन में मैं एक चीज़ जो इसके अंदर जो खूबसूरत बात है, और वो आप लोगों के लिए, एंड दिस इज एन AI बेस्ड एक्चुअली, और इसमें अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट बना लें, फ्री अकाउंट, और उस अकाउंट को बनाने के बाद फिर व्हाट यू कैन डू इज के वो आपको नोटिफिकेशन और प्लस आपके लिए लाइब्रेरी है जो आपकी सर्चेज हैं उसको भी सेव कर देगा। इसका अलावा और कोई पर्पस है नहीं। ख्याल रखिएगा semanticscholar.com नहीं है, semanticscholar.org है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग ओवर देयर एंड लेट्स से perceived risks if I'm just typing it just for the heck of it. तो इसमें जो एक चीज आप लोगों को समझानी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और वो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई भी अगर यहाँ पे हाईलाइट, इसमें फील्ड ऑफ स्टडी या फिल्टर या आमतौर पे जो पैरामीटर्स हैं उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए यू एक्चुअली नैरो इट डाउन। सो यूजुअली व्हाट आई डू, और आपकी अपनी प्रैक्टिस भी इसमें जाहिर है, आपका जो पैटर्न है वो आप उसे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली व्हाट आई डू, आई ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट टुवर्ड्स बिजनेस फर्स्ट, और जब मैं इसको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ डेफिनेटली, तो उसको रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जो है वो डेफिनेटली जो पेपर्स हैं, नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। Sir, you cannot say no to Google. I agree with you. I agree with you. You're right, 100%. Actually, you know, there's some peculiar, but like something strange is happening since this evening, or I've been working since morning on this, लेकिन I don't know, maybe हो जाता है कभी कभी, that's okay, और हो भी जाना चाहिए, थोड़ा सा चेंज आ जाना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, और अच्छा है खुल के। So coming back, Sir, does it find the items for you like Sci-Hub? अभी Sorry, like INN? थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए, उसके बाद then make an opinion out of that. Okay, that will be a valid question at the end. आप सिर्फ थोड़ा सा रुक जाइए। So field of study, for example, like 6.2 million, and then of course अगर आप यहाँ से इसको जरा शॉर्ट कर लें, पैरामीटर देते हैं, which फिल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, that's not a big deal, वो सारे काम आप लोग खुद कर सकते हैं। Now at 331, और डेट रेंज जो है वो आप इसको देख सकते हैं। गूगल स्कॉलर के अंदर डेट रेंज मुश्किल है, लेट्स से लास्ट 5 years,
और मैं इसको लास्ट 5 ईयर दे सकता हूँ. अगेन इज बिन रिड्यूस और इट विल बी रिड्यूस टू 123 एंड नाउ आई विल ओनली रिस्ट्रिक्ट कि मुझे सिर्फ PDF वाले दिखा दो. So this is that answers your question, and of course which I will always be interested in. यहाँ तो पे again research के अंदर हमें ये नई ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन मैं आपको strictly कह रहा हूँ whenever you go and find, you need to find, because you're not into meta searching, you're not into like systematic literature review. So always go and like click on the journal article, because journal article की authenticity सारे लोग मानते हैं. इसके अलावा दूसरी sources अगर हैं वो सब जरूरी हैं, but they are different from a different perspective. So अभी foundation build करने के लिए फिर then you can go specific something. And then of course journal conferences, you don't need it. Sort by relevance, or maybe what you can do. So we started with 6.2 million and now we ended up 12,400. Of course I have not like clicked over here, so we can do that. How about this, like 2019 consumer perceived risk of genetically modified food in China, or maybe business plan analysis, or maybe whatever. Let's say, let me click on it, any one of it, because I wanted to highlight one thing more, which actually you cannot, I repeat, you cannot do it in Google Scholar. और अभी सर्चिंग की टेक्निक बहुत एडवांस इंशाल्लाह मैं देखूंगा. मैंने डॉक्टर साहब के, डॉक्टर दानिश के वहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी अपनी वीडियोस में वहाँ मैंने रखा हुआ है पिछले सेमेस्टर के लिए, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, और वो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड दैट इज फॉरवर्ड रेफरेंसिंग एंड बैकवर्ड रेफरेंसिंग. दैट मीन्स ये वाला पेपर आगे कितने लोगों ने साइट किया हुआ है, और वो 5 लोग हैं, और वो पांचों पेपर्स कौन से हैं, तो वो भी आप यहाँ से आके इसको हाईलाइट कर सकते हैं. और वो पांचों पेपर, जी आई एम सॉरी, नहीं सर, ये तो बहुत ही एक्सीलेंट वो है सर्च इंजन. जी अच्छा, बिल्कुल. गूगल के मुकाबले में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. जी बिल्कुल, आपको हमेशा बेहतरीन चीज ही जो मेरे लिए मेरे साथ होगी वो मैं जरूर आपके सामने पेश करूंगा, याद रखिए हमेशा. बिकॉज आई बिलीव आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करना चाहेंगे, तो आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी क्यों ना पेश की जाए. ठीक है, और इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है. ठीक है ना, बिकॉज हम सब एक ही किश्ती में हैं और बेहतर काम करना चाहते हैं, सीधी सी बात है. तो ये इससे भी ज्यादा और अच्छी चीजें और भी हैं, वो अभी कुछ एक्सेस पाकिस्तान में है, कुछ नहीं है. मेरे पास एक्सेस है, दायरा मैं वो हर एक के लिए अवेलेबल नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो दैट इज समथिंग बियॉन्ड फिलहाल हमारे टॉपिक से. लेकिन ये 5 साइटेशन है. अब ये 5 साइटेशन है, फिलहाल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. 5 साइटेशन एग्जाम्पल, तो ये है एक्चुअली फॉरवर्ड कि ये वो 5 पेपर हैं जिसमें ये वाला पेपर साइट फॉरवर्ड, और प्लस आपको दूसरा वाला और लिंक भी है. दैट मीन यू कैन क्लिक ऑन इट एंड देन यू कैन गो ओवर देयर, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ज़ाहिर है वो 2019 का, तो 2021 के इस पेपर में किया हुआ है. इसकी अपनी साइटेशंस कितनी है, ये PDF है या नहीं है, और ये वाला में के 5 साइटेशन है जो आगे किया हुआ है एंड इज पिकिंग अप. और फिर ये रेफरेंसेस, मिसाल के तौर पर ये जो 28 रेफरेंसेस हैं, ये वो पेपर है जिनकी मदद से ये वाला पेपर लिखा गया है, तो वो भी लिंक है. तो एटलीस्ट आप एक पेपर को देखने के लिए, बट देन यू कैन एक्सपेंड लेफ्ट एंड राइट, और इसको देखने के लिए 1 दिन गुजर जाएगा, 2 दिन गुजर जाएंगे. तो गूगल स्कॉलर तो शर्माता है इसके सामने. और गूगल स्कॉलर में भी उसके तरीके हैं देखने के, वो लाइक पब्लिश और पेरिश और डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके फिर काम होता है. लेकिन एनीवे दैट्स ओके. दिस इज वन एरिया और जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. ये मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग अपने टॉपिक को सर्च करेंगे, और ये मुझे बेहतर, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग अपना टॉपिक को भी बेहतर आसान भी बनाएं और अपने लिए जो है वो चीज़ों को करें. अब नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स साइंस डायरेक्ट जस्ट टू शो यू दैट यू डोंट नीड एन अकाउंट. So Athens का. So this is the screen, sciencedirect.com, and usually you go and register yourself, और usually जो भी आपके लिए, जो भी आप इस पर रजिस्टर करेंगे, तो जो आप ढूंढेंगे उसकी वो अलर्ट्स जो है वो आपको नोटिफिकेशन में जो आपके मोबाइल पे ईमेल, और वो आपको भिजवाएगा. एंड दैट्स wonderful because somebody else is working for your topic and they keep on sending you notifications so that you don't need an account, need like Athens account or maybe some other else or university account to have that register. You can do that. और इसके अंदर फिर जाहिर है फिर आप कीवर्ड से यहाँ से सर्च कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे influence of digitalization on HRM, which I've done that, or maybe something like for other people. So maybe EWOM, electronic word of mouth. My primary concern have been over in that area. Marketing का है मेरा. So अब ये EWOM को अगर मैंने सर्च किया है तो again 966 रिजल्ट्स हैं, और फिर सारे में इसका भी यूज करूंगा कि किस तरह से मुझे यूज करना है फिल्टर्स को. और फिल्टर यूज करने के बाद जाहिर है मैं यहाँ से क्या करूंगा, और यहाँ से मैं पेपर डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा अनटिल अनलेस पेपर जो है वो ओपन एक्सेस ना हो. और ओपन एक्सेस अगर अवेलेबल है तो वो मेरे लिए भी अवेलेबल होगा, और फिर मैं उसको डाउनलोड कर सकता हूँ. नहीं
तो आई कैन क्लिक ऑन लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, और मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद देन आई नीड द DOI numbers, so I'll just need copy this DOI and just go to the SciHub, और फिर उसके बाद वहां से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ. So this is what you can do without. और अब ये देखिए मैंने लॉगिन नहीं किया, मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन नहीं किया, पर स्टिल आई एम यूजिंग इट. ठीक है, ये मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ. तो इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट यू कैन सर्च, और प्लस इसके बाद और दूसरी भी टेक्निक है. दिस इज व्हाट you can do that. So this is what I wanted to discuss at the end of the day to make it more practical for you to find it and to search and to go deeper. और प्लस उसके अंदर भी लाइक एडवांस सर्चेस की अगर वो चीजें ले लें, और इसमें अगर और देखना चाहें किस तरह कर सकते हैं, प्लस इसकी रिकमेंडेशन आर्टिकल भी हैं और ये सब चीजें भी हैं. नाउ इन सब बातों के बाद ना आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर ऐप दैट्स एन एंड्रॉइड बेस्ड ऐप एंड ऑफ कोर्स फॉर iOS बेस्ड आल्सो. और आई वुड लाइक टू शो इट टू यू कि ये ऐप भी अपने आप उसे इंस्टॉल कर लें. और इसमें खूबसूरती ये है कि आपको फ्री, जाहिर है ये आपको पेपर नहीं देगा, पेपर डाउनलोड नहीं करेगा, कुछ पेपर जो ओपन एक्सेस हैं वो डाउनलोड भी करने देगा. ये आपको पहले जर्नल्स आपके रिस्पेक्टिव एरिया के पिक करने देगा, और जर्नल्स को जब पिक करेंगे फिर आपको जो सर्च करेंगे तो वो उन जर्नल जो आपने खुद सिलेक्ट किए हुए उन जर्नल्स के अंदर जाके, और ब्रॉड एरिया के जर्नल्स हैं तो वो अच्छे बहुत अच्छे जर्नल भी हैं, सब आपको मिलेंगे, और वहां जाके वो सर्च करके आपको वो लेकर आएगा पेपर, और फिर वो अलर्ट भी आपको नोटिफिकेशन जो है वो भिजवाता रहेगा. और अगेन लाइक समबडी एल्स इज वर्किंग ऑन योर टॉपिक एंड यू कैन डू दैट. मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और वो यहाँ पे लाइक नेम ऑफ द ऐप जस्ट टू गेट यू फेमिलियर विद, कि मैं फिलहाल मैं एंड्रॉइड पे यूज करता हूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. और ये डायरेक्टली हम उसकी वेबसाइट पे भी जा रहे हैं. और जस्ट टू मेक इट मोर फेमिलियर, दिस इज एक्चुअली द आइकॉन रिसर्चर, एंड इसका अकाउंट यहाँ पे बनाने में फिर भी यहाँ पे ही फायदा है, क्योंकि वहाँ पे भी आप लॉगिन करके अकाउंट बना सकते हैं. सो यूजुअली यू कैन गो विद द गूगल प्ले ऐप स्टोर, और दिस इज सम चाइनीज आल्सो, बट लेकिन आप ये जाके यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन एंड प्लस ट्राई टू इन्वॉल्व yourself or like go dive deep into a professional domain of searching. और वो सब अब जो है बेहतर से बेहतर चीज़ों को ज़ाहिर है आप अडॉप्ट करने की कोशिश भी करें तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी. और बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है वो सब आपके लिए अवेलेबल हैं. ये सारे जर्नल्स हैं, और जर्नल्स में आप इसको चूज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड दीज आर द थिंग्स, फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू दैट. ओके, सो दिस इज सो फार बट फ्रॉम माय एंड, and I hope it would have been useful for all of you at the end. और ये सब चीज़ें जो आपके लिए हैं, और भी down the line अभी I'm working on lot of things for all of you. और कुछ चीज़ें अभी जानबूझ के मैंने होल्ड की हुई हैं, ज़ाहिर है वो आस्ता आस्ता I would like to give it to all of you. वो जैसे मिलेगा, जैसा बेहतर होगा, वो भी मैं आप लोगों को और भी चीज़ें मैं देना शुरू करूँगा. सर जो आपने और एक सॉफ्टवेयर की बात की थी फर्स्ट क्लास के अंदर कि कोई सॉफ्टवेयर है जो आप बेसिकली एक्सेस लेना चाह रहे हैं ताकि वो हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए बेसिकली एनालिसिस वगैरह के लिए. जी बिल्कुल, वो भी मिलेगा, और मैं अंडर नेगोशिएशन विद दैट पर्टिकुलर कंपनी, और उसके अंदर एक्चुअली 3 या 4 है उसमें जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उसके अंदर अब जो भी मुझे बेहतर तौर पे आप लोगों के लिए, मेरे जात के लिए नहीं, आप लोगों के लिए जो भी मुझे ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी देगी, बट डेफिनेटली आई विल गो एंड अडॉप्ट दैट, और लेट्स सी व्हाट दे आंसर ऑन दैट, बिकॉज दे हैव टू कम बैक ऑन इट, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली ईस्टर हॉलीडे और ब्लैक वो जो सारा था उसकी वजह से वहाँ पे गैप आया हुआ था, तो दे वर नॉट more say responsive. तो अब थोड़े उसके बाद वो वापस आए हैं तो definitely they are trying to be more responsive on this. Okay sir, thank you. ठीक है ना, so I'm working on it. इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा I will let you know to all of you guys. Thank you sir. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. बहुत आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. आप लोग सिर्फ अपना आपको just try to be more in terms of let's say concentrated on the work. और इसमें टूल्स बहुत सारे हैं अभी जो मैं अभी आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग में सिर्फ अभी शो कर रहा हूँ, और ये सारे टूल्स प्रैक्टिकल हैं. मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, और सारे फ्री हैं, ये मैं आपको बता दूँ. मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जो पैसों पे मैंने अपने लिए रखा हो, फिर मैं बोलूँ आपको बता दूँ फिर आप पैसे पे, नो, देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट, बिकॉज मैं भी आप ही की तरह जो हूँ वो एक ट्राइंग टू बी एन एस्पायरिंग रिसर्चर ऑल्सो. तो इस वजह से जो भी बेहतर रिसोर्सेज हैं जो मेरे लिए अवेलेबल हैं और मैं समझता हूँ, तो वो मैं आपके लिए भी अवेलेबल करूँगा इंशाल्लाह, to the best of my efforts.
तो इंशाल्लाह। Thank you so much, sir. Jazakallah. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच मिस मैक, एंड आई होप लेट्स कंक्लूड। और अब सिर्फ डेडलाइन आपने नहीं भूलनी, आपने जो है वो 20th नेक्स्ट क्लास तक आप यू नीड टू फाइनलाइज योर टॉपिक, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल बी डिफेंडिंग योर टॉपिक, और इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग में एक्सप्लेनिंग अबाउट योर टॉपिक, और उसके अंदर भी जो भी टॉपिक है, अगर कॉन्सेप्चुअल मॉडल भी आपका, अगर कोई उस पर टॉपिक के अंदर यू लाइक टू फ्लो ऑफ द वर्क वो भी बना लें, तो ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर दानिश मैं फिर जो आपकी स्क्रीन शेयर करने का आपको मौका दें, तो फिर आप उसको जो है वो एक्सप्लेन करें आपके स्क्रीन के सामने, ताकि हम भी आपके एक पीपीटी या 1 स्लाइड और मे बी 2 स्लाइड, नॉट मोर देन दैट, ताकि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा सकें कि व्हाट डू यू वांट टू डू, और इसके लिए ज़ाहिर है कुछ पेपर्स और दूसरी चीज़ों को आप देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, एंड आई अप्रिशिएट एंड आई विश यू गुड लक। और आप लोगों ने सर एक जी खालिद सर, साहब, इसमें अगर कोई गाइडेंस लेनी, हाँ ये सर, ये टॉपिक सेलेक्ट करने में अगर कोई गाइडेंस चाहिए हो तो सर आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल खालिद साहब, देखें मैं एक और चीज जरूर मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी अगर मैं बात भी करूंगा और माशाल्लाह थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर वर्कड आउट होगा आपकी तरफ से, तो आप मेरी बातें जल्दी से समझ लें। तो पहले जो रीडिंग है, पहले आप ये चूज कीजिए 5 अप्रोचेस में से किस अप्रोच पे काम करना चाहते हैं, जो मैंने आज एक्सप्लेन किए, उस अप्रोच में से लेके उसकी सिर्फ उसी की किताबें, ज़ाहिर है मिसाल के तौर पे आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 9 या 10 किताबें, क्योंकि 9 है और वो ये किताबें जो है वो आप उसे रीड करना जरूरी नहीं है। आप पहले एक चूज करें कि यार आई थिंक फॉर दिस कोर्स मैं इस वाले टॉपिक पे जरा काम करके एक्सप्लोर करके देखता हूँ कि ये है क्या। तो शुरू के शायद एक दिन आपको ये लग जाएगा कि चले मैं थोड़ी एक एक किताब देखूं है क्या इसके अंदर, पता क्या चल रहा है। फिर किसी एक रिसर्च अप्रोच के ऊपर आपका दिल आ जाएगा या आप बोलेंगे आई थिंक दिस इज मोर प्रैक्टिकल, मुझे अच्छा लग रहा है। और जब इसको ये अच्छा लग रहा है तो आप फिर उसी पे यू स्टार्ट फाइंडिंग टॉपिक। और बेहतरीन मैं आपको हिंट करवा रहा हूँ, उसी किताब की पहले चैप्टर की एक्चुअली उसके बारे में और ये बीच के दौरान भी उसके रेफरेंसेस देख लीजिए, कोई ना कोई पेपर जो है वो आपके दिमाग से जो भी आइडिया आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टकराएगा। नहीं तो उस वाले पेपर को सिमेंटिक स्कॉलर में लेके चले जाएं और वहां जाके फिर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के हिसाब से देखेंगे आजकल क्या चल रहा है। सो अगेन ये सब टूल मैंने इसीलिए आपको बताया। और फिर ऑफ कोर्स मैं खालिद साहब मैं जरूर मौजूद होऊंगा और आप जितनी मेरी जो एफर्ट होंगी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना आप लोगों को बेहतर गाइड कर सकूं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। Sir, just one question. G5. Sorry, sir, I'm taking your time. Sir, it is regarding the slides that we discussed regarding phenomenology and case study. Sorry, ethnography and case study. Sir, one of my concern topics was about transgenders and their employment in our banking sector and the gender bias related to the work environment and organizational culture. Sir, I'm not sure whether it falls in ethnography or whether it falls in phenomenology. Like ethnography is more of the ethnography. But sir, it is argued that transgender is not a culture. I know. How about you give it a shape as a culture, because they have their own voice and they have their own patterns. Because sir, by definition, it is against the culture, the definition of culture. अच्छा इसको इस तरह भी देखें। Culture is like largely accepted norms adopted by a group that have common interests. अच्छा चलें एक और मैं I agree. मुझे ये बताइए, a culture is a learned thing or like it can be taught? It cannot be taught. It can only be accepted and adopted intuitively plus normatively. So right, इसका मतलब है no definition fits to it. एक ये मैं आपको एक नया एंगल दे रहा हूँ, आप माशाल्लाह खुद भी समझदार हैं। उसकी वजह ये है कि ये आम तौर पे कभी-कभी हाँ जी कभी-कभी होता ये है कि हमें बायस कर दिया जाता है किसी एक डायरेक्शन की तरफ ही सोचने को, और फिर हम उधर ही देखते रहते हैं, पता चला असली चीज की तरफ भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूँ। अब माशाल्लाह एथनोग्राफिक के पर्सपेक्टिव से इसको थोड़ा सा उस तराजू में भी तोल के देखिए, हो सकता है आप कोई यूनिक कोई बात कह सकें जो वर्दी हो, और तो नॉर्म से हटके भी अगर हो भी तो क्या पता एटलीस्ट आपकी बात का पॉइंट ऑफ व्यू तो आ जाएगा ना। अच्छा लेकिन उसको it does relate to anthropology. Exactly. Yeah. Of course. Okay, sir. And sir, second question was that it is exploratory, so I have very little literature available for me, and the scales are not there. You know. I'll let you know. अभी उसमें भी स्केल डेवलपमेंट में वो भी अभी होगा। उसके अंदर अगेन मिक्स मेथड रिसर्च। नहीं नॉट बाय नेक्स्ट वीक। देखिए अभी उसमें होगा ये कि पहले आप टॉपिक जब फाइनलाइज करेंगे तो फिर डाउन द लाइन स्पेसिफिक। अभी माशाल्लाह
हम किताब की तरफ चल रहे हैं और किताबों में कुछ चीजें हम So, sir, एक्सप्लेन we are करेंगे। not discussing methodology next week. नो डेफिनेटली नॉट, Okay. बिकॉज अभी एकदम नहीं, और उसके Okay. बाद इवेंचुअली इट That's a विल टेक relief. टाइम। या ऑफ कोर्स, Thank और you. उसके बाद Thank you. ऑफ कोर्स मेथोडोलॉजी नहीं, वो अभी तो बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे। मेथोडोलॉजी विद द पैसेज ऑफ टाइम इट एक्चुअली इवॉल्व्स और मे बी डेवलप। और असल में एक और भी बड़ा मसला है हम लोग सब लोगों के साथ, और वो मसला ये है कि अगेन हमारी क्लेरिफिकेशन जो है ना वो एक्चुअली वो बहुत सारी चीज़ों पे बेस नहीं करती है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, ये हमारे लोगों के साथ का मतलब है, मैंने अपनी बात लिखी है। और वो I होता like ये है your being real. या तो उसमें होता क्या है, होता ये है कि मेथोडोलॉजी में हाइपोथेसिस या नॉन हाइपोथेटिकल अगर वो उसमें को प्रूव करना है तो हर एक एंगल कुड बी अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी। यही नहीं समझ में आता। हम हमेशा क्या करते हैं, होलिस्टिक पिक्चर लेते हैं कि ये सारे वेरिएबल्स को लेके एक ही टेक्निक लगा दो और वही मेथोडोलॉजी है। नो, every single variable may be interpreted, may be checked, may be hypothesized, or may be checking off the hypothesis, may be based on a different methodology. So this is actually the concept, and यही This happens in EBOM a lot. exactly ठीक। और इसी तरह से मिक्स मेथड रिसर्च का भी कॉन्सेप्ट वो यही था कि इसमें जो थर्ड है एक्सप्लोरेटरी, और एक्सप्लोरेटरी के अंदर जो है वो आपको फिर स्केल डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेज और वो सारी चीजें वो देखनी पड़ती हैं और यू कैन डेवलप। उसमें फोकस ग्रुप का बहुत ज्यादा अमल दखल है, और जो माशाल्लाह आपके साथ के लोग भी हैं जो आपके कोलीग क्लास के भी हैं, कुछ एक्सपर्ट भी, और उनको लेके फिर देन यू कैन कलेक्ट द वेरिएबल एंड देन यू कैन इन फैक्ट डू द फैक्टर एनालिसिस, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस टू इट। और वो सारे प्रोसीजर वो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो आएगा। मैं भी स्पेसिफिकली दायरे मेथोडोलॉजी, जब हर एक की अपनी अपनी मेथोडोलॉजी होगी और मिक्स मेथड रिसर्च के अंदर इसको लेके भी जाना चाहेंगे तो फिर मैं स्पेसिफिकली इंडिविजुअली आप लोगों के साथ काम करूंगा। अभी तो एक जनरली एक पर्सपेक्टिव वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप दिस सिनेरियो फॉर दिस। So we are just going to present the topic and why we want to research it. या एग्जैक्टली That's it. एग्जैक्टली Okay, एग्जैक्टली clear. Thank you so थैंक यू। much for today, Ramadan Kareem. बिल्कुल, आपके लिए भी रमजान मुबारक हो आप सब लोगों को। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Allah अल्लाह Hafiz. अल्लाह Allah हाफिज। so much. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।